Devashish Nandi, who chairs our Audit Committee and Risk Management Committee, Radhika Dudat, who chairs our Nomination and Remuneration Committee and CSR Committee, and Pallavi Dinodia Gupta, who chairs our Stakeholder Committee. Also accompanied by Pritipal Singh Kochar, a Non-Executive Director, and Manish Gupta, our Managing Director. By way of introduction, I represent Infinity Holdings on the board, and everybody at Infinity, our promoter, is excited and proud with the way Jagsonpal is shaping up. My detailed note is part of the annual report, which I hope you've had a chance to glance through. I will keep my address short and summarize a few key events during the year. During this year, we took decisive steps to deliver on our long-term aspiration of building a great, sustainable business. We started the year on a strong note, but did face some challenges in the form of severe competition and availability of counterfeit products in two of our flagship brands. I'm glad to mention that we have course-corrected, and these challenges are now behind us. One of the key events which occurred after the close of the financial year was our first inorganic initiative, I hope to be followed by more. We acquired the Indian and Bhutan businesses of Yash Pharma, which we believe fits well with our company's ethos and provides us access to dermatology and pediatric segments, which are areas that are of rapid growth in the Indian industry. As we speak, we have integrated these businesses seamlessly and have achieved this ahead of our planned schedule. I'm also proud of our community initiatives, and one of the things we did during the year was to bring all our CSR initiatives under the My Saki umbrella. Our focus continues to be on improving women's health, for which we have now added a dedicated mysaki.in website to support and guide women through menarche and to menopause, as well as added multiple toilet facilities in girls' schools in Uttarakhand and Punjab, supported with menstrual hygiene awareness programs for young girls. At Jagsonpal, our commitment revolves around the core principles of health, science, and service, guiding us in every endeavor. We are confident that we have put these in place as pivots to tap into opportunities that lie ahead to create value for all of us shareholders. Before I conclude, I acknowledge the immense value our people bring to drive our strategy, and also the support and guidance provided by my fellow board members, who have always been here for me and for the management. Manish Gupta will now provide more insight into the business performance and strategy in his address. I now request Manish Gupta to provide a view on the performance of the previous year, followed by Q&A. Thank you. Thank you, Harsha. It's my pleasure to connect with all of you again, and thanks for being with us today. My detailed address to shareholders is available in the annual report. I will now take a few minutes to take you through the operational and the financial performance for the year gone. Next slide, please. As Harsha mentioned, FY24 or year gone by has been full of challenges, and I'm glad to say that the team Jagsonpal has performed admirably to handle these challenges very well and come out with fairly decent performance. We started the year well. However, somewhere along the way, we faced headwinds across two of our leading brands. One was faced with hyper competition, and one was faced with counterfeit product availability. We, of course, undertook multiple measures to deal with the second, even as we course-corrected our strategy on the first. Coming out of those measures, while we did take a dip in our sales, we could maintain profitability largely in terms of our margins. And in spite of all the headwinds, we could generate healthy free cash flows of about 35 crores during the year. What we also did was fine-tune our new product introduction strategy. While Jagsonpal has been always known for picking up small niche areas, we further fine-tuned it by bringing in certain unique first-time products in India, Mamup,
FE Protein, Quizzy ER, to name a few. All of these are women care products. One was a HRT or hormone replacement therapy product, which was the first time in India for dealing with menopause. Pea protein is lactoferrin-based iron supplement for pregnant women, and Quizzy ER is for dealing with morning sickness, wherein we brought in tablet-in technology for the first time in India. As Harsha also mentioned, CSR initiative is something which we take great interest. We have been able to bring the entire program under an umbrella of MySakhi, and towards that we also launched mysakhi.in, which is for women's well-being right from menarche to menopause. And of course, looking at the performance of the company, the board has recommended a dividend of 100% subject to your approval during the course of the meeting. Now, taking a deeper look into the financial performance, our revenues for the year stood at about 209 crores, which reflected a 12% decline over last year, most of which was contributed by the two leading brands which I mentioned earlier. Our operating performance or operating EBITDA stood at 36.4 crores, a decline of 16%, but all in all, we could maintain our margins roughly around the same levels as last year at 17.5% or so. Our profit before tax and profit after tax declined between 14 to 16% each, and we generated about 30 crores in profit before tax and a 22.5 crores in profit after tax. In spite of all the challenges, there was only a 50 bips decline in our net profit margin to 10.8%. Next slide. Now, I think this gives you a good perspective of the performance over a period. So we have been growing consistently before the dip that happened last year, but I'm happy to say that our new margins are upwards of 17%, which we have displayed consistently over last 2 years, and is almost 1.5 times or more than 1.5 times of our historical operating margins. Next slide. Equally importantly, we are leveraging or using our capital employed very, very judiciously. And even while we have grown over last many years, we have been actually successful in reducing both the quantum of the working capital that we use in our business, which has dropped from 36 crores in FY20 to about 16 crores now. And also as a percentage of sales, it has dropped by almost dropped by 2/3 from 22.7% of sales. Nowadays, less than 8% of our sales. And I think our working capital efficiency should be amongst the best in the industry. While the year has been tough, While the year has been tough, but looking at the overall performance and the confidence in the future, the board has recommended a dividend of 100% for the current year. Next slide. Now let me give you almost 4.5 months of the current year has elapsed, and let me give you a little perspective of how we have bounced back in our performance in the current year. The business, as you would have noticed in Q1 performance, is back on growth trajectory, and that has been a significant ramp up compared to the second half of the last year. However, with the growing momentum, we are well on track of delivering a 30% revenue growth for the current year, partly aided by inorganic strategy and, of course, overall recovery in our existing business as well. As Harsha mentioned, we also did our first inorganic foray by acquiring the India and Bhutan business of Yash Pharma, which provides us with therapeutic expansion of our footprints. This business was acquired or announced in April and has been integrated with Jagsonpal effective 1st June 2024. Successful integration is also driving our margin improvement, and we are well on track of delivering over 250 bips margin improvement, surpassing about 20% operating margin for the full year in the current year. We also
are in the final stages of monetization of our Faridabad facility, agreement for which was signed about 45 days back, and the agreement is likely to be concluded within the month of October. All in all, we continue to have a strong balance sheet. We started the year with a cash balance of about 150 crores, and I'm happy to say that we expect to end the year as well with 150 crores plus of cash surplus, in spite of investing almost 92 plus crores in the acquisition of Yash Pharma. This would be, of course, significantly supported by our operating cash flows and partly also because of sale of Faridabad facility. Next slide. I think this is something which is important to see in terms of how the company has progressed in the last 3 months. Last year was challenging, and as per this is external source IQVIA, which generally captures the performance of entire pharmaceutical industry. As per them, we declined by about 8% during the last year. But I am happy to say that we are back on growth track, and our first quarter performance reflects a 6% growth vis-a-vis the same period last year. Adjusting for dydrogesterone, which suffered hyper competition, and in fact we have settled to a new but much lower level of business going forward, the business has grown at 10% vis-a-vis a decline of 6% in the last 1 year. More importantly, 8 out of our top 10 brands had declined in the last year. And in the first quarter of the current year, we have been able to dramatically alter that. And 8 out of our top 10 brands are actually depicting growth. And some of them very healthy, as high as 37% and all. You would notice here that really the only negative in this list is Divatron, which is our dydrogesterone brand, wherein we continue to face enormous headwind, and therefore there has been a decline. Doxipal is anti-infective, and therefore there is an element of seasonality here. I'm not concerned of the decline here because the monsoon has picked up thereafter, and the business is back on growth track in Doxipal as well. Next slide. Coming to a recap of our Q1 performance, we had a sharp recovery in Q1 vis-a-vis our second half of last year. And even compared to last year first half or first quarter, we had a 2% growth in the period. Our operating profitability was back on track. It was almost 3x compared to our Q4 performance, but at 12.7 crores during the quarter. It was more or less same as Q1 of last year. And both in terms of PBT and PAT, while it reflects a decline here, this was largely on account of 3.6 crores of one-time cost which we incurred for the acquisition. Adjusted for that, both our PBT and PAT actually was higher than what we did last year. Next slide. So now I will hand it back to Abhishek to take the proceedings further. So these are the formal agenda of the annual general meeting. So these are part of AGM notice, and these are been, for which the meeting has been transacted. So these all will be subject to the declaration of passing of subject to the presentation that this year we faced multiple headwinds, but 2 of them were very prominent, wherein 2 of our largest products, 2 हमारे बड़े प्रोडक्ट में, एक में हाइपर कंपटीशन था और एक में नकली और काउंटरफीट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की वजह से उसका डिमांड कम हुआ था. तो मोरलेस ये जो हमारा सेल इस साल कम हुआ है, ये 2 वजह से कम हुआ है. एंड सेल कम होने की वजह से हमने खर्चे काफी कम किए, लेकिन पूरा खर्चा तो नहीं रोक सकते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट होता है. एम्प्लॉय कॉस्ट इज आवर मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट, and therefore our financial performance has come down in terms of overall profitability. लेकिन जब आप देखेंगे कि 2 साल पहले हमारा 217 करोड़ का रेवेन्यू था और उसमें हमारा ऑपरेटिंग EBITDA was 25 crores. उसके बावजूद इस साल हमारा सिर्फ 208 का रेवेन्यू आया, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग EBITDA was more than
36 करोड़। तो इससे आपको पता थोड़ा वो होगा कि किस तरह से कंपनी में 2 साल में तरक्की हुई है। कि हमारा इस साल का चाहे ऑपरेशन से रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी 2 साल पहले से बढ़ी है। तो इसके लिए ये बहाना नहीं दे रहा हूं, मेहनत तो करनी पड़ती है और कई बार रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और कई बार खराब भी हो जाते हैं, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से और हर एम्प्लॉय जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है पूरी मेहनत कर रहा है। हम भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा हो और मेरा ये पूरा भरोसा है कि इस साल हमारा रेवेन्यू, जो कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी दिया, 30% से ज्यादा बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिन जो 17.5% था लास्ट ईयर, इस साल 20% से ऊपर जाना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा, पिछले साल वॉज ए ईयर विच वॉज abnormal in lot of sense because of things outside our control, and we are back on growth track as also on improved profitability. कुछ सवाल उठाए गए थे फैक्ट्री विजिट के बारे में। तो जैसा कि आप ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। करीब 3 साल पहले जो हमारी फरीदाबाद फैक्ट्री थी वो बंद कर दी गई थी क्योंकि वो अब रेसिडेंशियल एरिया में आ गई है, और तब से हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हैं अपने क्वालिटी सिस्टम के अंदर, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल हमारा रहता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हम बाहर कराते हैं। तो प्लांट विजिट इसलिए कोई फायदा नहीं है हमारे पास क्योंकि कोई प्लांट नहीं है, उसी के चलते, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लांट नहीं है। एक शेयर होल्डर ने बोला कि क्या कंपनी के इतने बुरे दिन आ गए कि प्लांट बेचना पड़ा और फैक्ट्री बेचनी पड़ी, तो मैं उनको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि कंपनी के कोई बुरे दिन नहीं आए, इनफैक्ट बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। जब हमने 2 साल पहले ये कंपनी ली थी तब सिर्फ 50 करोड़ का बैंक बैलेंस था, जो मार्च में 2 साल के अंदर 150 करोड़ पे पहुंच गया था। ओके, तो 100 करोड़ हमने कंपनी में करीब 2 साल में बढ़ाए हैं, जो कि फ्री कैश है कंपनी में। लेकिन प्लांट और या वो फैसिलिटी, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, फैक्ट्री का जो लोकेशन है फरीदाबाद के प्राइम लोकेशन में था, कोई उस पे कब्जा ना कर ले, उसके हिसाब से हमने उसे ये सोचा कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि इसको बेच देना ही भलाई है, तो देयरफॉर वी सोल्ड दैट फैसिलिटी। एज वी स्पीक ट्रांजैक्शन विल बी कंज्यूमेटेड इन अक्टूबर और इसका एक्स्ट्रा पैसा कंपनी में आएगा। 10 करोड़ आ चुका है और 30 और करोड़ आना है इसके थ्रू। कुछ क्वेश्चंस थे बोनस के बारे में, तो सारे बोर्ड मेंबर्स हमारे मीटिंग में हैं, सब लोगों ने इस पे आप लोगों की रिक्वेस्ट का ध्यान से सुना होगा। मेरा ख्याल है कि बोर्ड मेंबर्स इस बारे में जरूर विचार करेंगे। एक आपने सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी के बारे में जसमीत जी ने क्वेश्चन किया था, तो ये सीडीएमओ हमारा कंपनी का बेसिक अपॉर्चुनिटी या स्ट्रेटेजी इज टू ओनली ऑपरेट इन इंडिया इन ब्रांडेड जेनरिक्स मार्केट। तो सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कि हम नहीं है, तो उस तरफ जाने का इस वक्त हमारा कोई विचार नहीं है। मंजीत सिंह जी ने एक प्रश्न किया था इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के बारे में। मैं इस पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारा सेक्रेटरियल टीम देगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्प्लॉइज के लिए अमंगस्ट ऑल द कॉम्पिटिंग कंपनीज में टॉप एंड पे होना चाहिए। जितना एम्प्लॉय सिक्योरिटी हम देते हैं, मेरे ख्याल से बोथ ऑन मेडिकल फ्रंट और in case of any inappropriate event happening like death and all, I think this company takes care of all its employees and our insurance would be best in class in the industry. मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन प्रवीण जी ने किया था एआई टूल्स यूसेज के बारे में। तो जहां तक हमारा बिजनेस का है, बेसिकली ये टच एंड फील बिजनेस है। इसमें हमारे लड़के जाके डॉक्टर्स को मिलते हैं,
और उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अवगत कराते हैं और उसी के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन लाते हैं। इस वक्त एआई टूल्स का यूसेज लिमिटेड है, पर डेफिनेटली ये एरिया में हम डेफिनेटली ज्यादा काम करेंगे और किस तरह से परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एआई टूल्स के थ्रू कर सके वो हमारा फर्स्ट फोकस एरिया रहेगा। I think, Ashish, I covered what I could think of. If you can take and explain any financial questions. Sure, Andy. I will touch upon a couple of questions. One of the questions was on कि लीगल केसेस का कंपनी का क्या स्टेटस है। तो मैं शेयर होल्डर्स का ध्यान कारो रिपोर्ट जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स वॉकर चिल्लुक की है उसकी तरफ करूंगा, जिसमें एक पूरी टेबल है जहां हमारे वैट के और कस्टम ड्यूटी के या सीएसटी के या इनकम टैक्स की केस चल रहे हैं। मैं शेयर होल्डर्स को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि एज ए कंपनी हम लोग इसका एवरी मंथ रिव्यू करते हैं, टाइमली हियरिंग्स को अटेंड करते हैं और बेस्ट पॉसिबल डॉक्यूमेंटेशन के सपोर्ट के साथ हमारे केसेस नॉर्मली फेवरेबली क्लोज हो रहे हैं। इसमें अभी ऑडिटर्स की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई विशेष ध्यान की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन ऑडिटर्स फीस के रिलेटेड एक शेयर होल्डर मंजीत जी ने किया था, लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट फीस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एज पर लॉ है। दे हैव बीन अपॉइंटेड in the last financial year. स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 इयर्स के लिए होता है और उसके बाद उनका रोटेशन होता है। वो उस समय जरूर से बोर्ड मीटिंग में और फिर शेयर होल्डर मीटिंग में आएगा और तब उस पर शेयर होल्डर डिसीजन ले सकते हैं। फिजिकल एटीएम की आपकी जो रिक्वेस्ट है कुछ शेयर होल्डर्स की, हम समझ तो सकते हैं, परंतु जो ये माध्यम है इसमें हम सबको ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ पा रहे हैं और हम सब क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट भी आपके साथ टच में करेगा। मेरे कलीग अभिषेक जी मुरलीधर जी से जरूर बात भी करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट की बात नहीं हुई है तो हम जरूर से करेंगे। एज रिगार्ड्स एक शेयर होल्डर की क्वेरी थी कि फाइनेंस कॉस्ट डबल कैसे होती है। ये बहुत ही अच्छी क्वेरी लगी और मेरे लिए बड़ी ही प्रिय क्वेरी है, तो मैं चाहूंगा कि इसको जरूर से एड्रेस करूं। अब ऐसा है कि इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लागू होने के बाद फाइनेंस कॉस्ट वो नहीं रही जो आप बैंक को इंटरेस्ट के लिए देते हैं। जैसा कि आप चेतन जी देखेंगे हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आधा हो गया, हम लोगों का कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द स्टॉकिस्ट भी आधा हो गया है। जो हमारा पहले 40 दिन था वो 20 दिन हो गया है। इसलिए हम लोग कोई फाइनेंस कॉस्ट बाहर नहीं पे कर रहे हैं, कोई बैंक से हमारी बोरोइंग नहीं है। जैसा कि एमडी सर ने बताया हमारे पास में कैश बैलेंसेज है, फ्री कैश बैलेंसेज है, जो कि स्टार्ट में 150 करोड़ थे और एंड में भी 150 करोड़ तक हम पूरी मेहनत से करेंगे, क्योंकि हम अपने नेट वर्किंग कैपिटल पे पूरा फोकस रख रहे हैं। टाइमली क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, स्टॉकिस्ट से टाइमली पेमेंट लेना और इन्वेंट्री का अच्छा लेवल बना के रखना जिससे कि स्टॉक आउट भी नहीं हो और एट द सेम टाइम हमारा एक्सेस इन्वेस्टमेंट भी न हो। तो फिर ये फाइनेंस कॉस्ट है क्या? ये फाइनेंस कॉस्ट है आप जो इंड एएस की वजह से जो लीज अकाउंटिंग के प्रोविजंस आए हैं, तो जो ऑफिस का जो हमारी लीज कॉस्ट होती है ये उसमें से कैलकुलेशन करके हमारे को फाइनेंस कॉस्ट में डालना होता है। So it is not any cost which is going to the bank. It is not any interest cost. It is just a lease accounting cost in accordance with the Ind AS accounting principles. I think, sir, with this, I have taken up all the questions. Abhishek, if anything. Yeah, Abhishek, just before you start, I wanted to add 1 or 2 other points. जो आपने, and thanks आशीष, जो आपने बहुत अच्छा explanation दिया। एक प्रश्न पूछा गया था कि ये दिल्ली के ऑफिस गुड़गांव शिफ्ट करने से क्या हमारी कॉस्ट पे फर्क पड़ा है। तो अगेन मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि हमारी लीज कॉस्ट जो गुड़गांव में हम दे रहे हैं वो दिल्ली अमाउंट में दिल्ली के बराबर ही है। दिल्ली में भी हमारा ऑफिस लीज पे था, यहाँ पे भी लीज पे ही है,
लेकिन हमें लगभग 1.5 गुना जगह मिला है और बेहतर जगह पे मिला है. तो एक्चुअली वी आर बेटर ऑफ इन द न्यू प्रेमाइस विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट आवर एंड. एंड एक क्वेश्चन 2-3 बार आईईपीएफ के बारे में पूछा गया था, तो वो ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगा कि आप कंपनी सेक्रेटरी जी से कांटेक्ट करिए, वही इसके बारे में बता पाएंगे. एंड आई एम श्योर अभिषेक विल आल्सो एड्रेस सम ऑफ इट नाउ. Yes, sir. Yeah, yeah. कुछ क्वेरीज थी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन क्वेरीज थी कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से नहीं हो पाता है. एज जैक्सनपाल का इन्वेस्टर रिलेशन का पेज है, उस पे बहुत सारे शेयर होल्डर के कम्युनिकेशन है. इफ किसी को केवाईसी अपडेट करनी है, किसी को कांटेक्ट करना है, वी हैव ऑल अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल. सो इफ शेयर होल्डर किसी और वी रिसीव मैनी रिक्वेस्ट कि हमारी ये क्वेरी है, हमारे कितने शेयर्स थे वो लॉस्ट हो गए, हम भी आप बता दीजिए कितने हैं. तो दीज आर ऑल एड्रेस्ड इन द एप्रोप्रिएट मैनर. एवरीवन इज रीचेबल. एंड moreover, if some of are facing any difficulties, so and on the other side our board line number, which also works because there are many calls which comes and directly get transferred to the extension of the secretarial department. So is not that there is a communication problem or there is a network issue. And the email ID of CS@Jagsonpal, which is the common investor relation email ID, through which we received all the speakers requests, and we shared all the links in the proper time so that they can join the call. And many of us joined the call. Even few didn't join the call from the list, but everyone got link and everyone was easily accessible to the link. And on the IEPF matter, one of the shareholders, Gaurav Kumar Singh, is told that these were transferred and he is facing a lot of difficulties. So for that, we have a mechanism. He can reach out to me through the cs@jagsonpal.com. And also in this regard, one of the requests which earlier I received for issuing the letter of entitlement for claiming their shares, that was also sent to the Gaurav Kumar Singh. And a scan copy was also shared with him. So these are the matters which are addressed appropriately in the timeline which have been provided by the same. So from IPL perspective and communication perspective, these are my response. And anyone who is facing the difficulties, we are happy to hear from the shareholders that anyone who is facing challenges is shares, dividend, annual report request, even the annual report request which we received. So we sent the hard copy before the AGM so that it is easily available to everyone. So this is all about the response from the common questions which were pertaining to the specific secretarial team. Thank you, Abhishek. We can now proceed with the other agenda. Yeah. So we hope we have addressed your queries appropriately.